So as I told you, in our today's class, we are going to deal with the nuclei, which are active and which are inactive in NMR. Means what type of nuclei are there, which are NMR active and which are NMR inactive. So to learn out all these things, we must have to know first of all what type of nuclei can be there, and nuclei means what. Okay, so see, whenever nuclei, you heard the word nuclei at that time, nuclei means it is nothing but the combination of neutron and the proton. I repeat once again, let me just try to explain you this by using simply whiteboard. Okay, so whenever you are dealing with the nuclei, at that time nuclei word का मतलब क्या होता है, nuclei word का मतलब क्या होता है कि nuclei, and this nuclei means it is about nucleus. It is what about, it is about nucleus, and whatever this nucleus is there, this nucleus is made up of number of protons and number of neutrons. As I discussed with you in previous class what type how protons are made up of and how neutrons are made up of. So see, neutrons and the protons are made up of from the quarks. They are made up from the quarks. Both of these are made up from the quarks, and whatever these quarks are there, these are made up from the type of quarks, up quark and the down quark. What type of quarks are there? Up quark and down quark. Now you may ask me, ma'am, what is mean by quarks, what is mean by up quark, what is mean by down quark? And to know these things, if you haven't watched the videos, previous videos, then go on that previous videos, watch them and come to the next come to the again the recording of this class also. Okay, so let me continue with the quarks, up quark and down quark and proton and the neutron. So now from today onwards, we are not dealing with these quarks, up quark and down quark, but we will discuss about only the nucleus, which is nothing but situated at the center of your atom, that is having plus charge, and whereas your electrons are moving around that nuclei in its a specific orbit or shell, you can say. I think up to this everybody is pretty now, and everybody knows these things very well. Now I would like to turn to the point, what type of, as I told you just now, what type of nuclei, what type of nuclei, can I rub this matter from this slide? Yes, ma'am. Yeah. So see, I think yellow दिसणार नाही. So nuclei means it is nothing but the combination of protons and the neutrons. Now what type of, listen very very carefully, हे जर समजलं तुम्हाला, if you guys are clear with this now, then NMR कौन से टाइप के NMR न्यूक्लियस आर एक्टिव एंड कौन से टाइप के न्यूक्लियस आर NMR इनएक्टिव. न्यूक्लिय मीन्स क्या, अब यहाँ पे न्यूक्लिय मतलब एनी एटम, इट कैन बी any atom like carbon, like oxygen, like nitrogen, like phosphorus, many more number of atoms are there. And will it be possible for any atom to calculate us the that atom is NMR active or NMR inactive? Is that okay, guys? Are you following me? Are you guys clear up to this? Network Yes, issue? Okay, so whatever these protons and neutrons are there, on this basis
एक गाठ मारून घ्या किंवा मी एक स्लाइड यूज करते तुम्हाला सांगण्यासाठी. लेट मी जस्ट टेक दॅट स्लाइड. with which yeah. So whatever these your NMR active and inactive nucleus are there, about them we are discussing. But before that, you must have to know, or you must have to tell me one thing, because I discussed these things many more number of times in my previous classes of NMRs. That is, what is mean by capital I in NMR? What is mean by capital I in NMR? It is related with the sorry, with the spin quantum number. What it is? It is related with the spin quantum number. It is related with what? It is nothing but the spin quantum number. It is nothing but the spin quantum number, and that is denoted by I. What is that I? I is spin quantum number. I is what? Spin quantum number, and it is related to the atomic and the mass number of nucleus. What does it mean? It means that, रुको एक मिनट, मुझे स्लाइड चाहिए. आपको स्लाइड क्लियर दिख रही है? Yes, हाँ. ma'am. So Yes, ma'am. yeah, okay. So see, whenever you are here in NMR, and now question came, the question may came in your mind, that is, ma'am, what you told us that carbon, now carbons have its isotope like C12 and C13 and C14 is also there. So whenever you have this carbon nucleus, at that time which carbon nuclei or which carbon nuclei can be active? Now on what basis you can determine, or on what basis you can tell them? You can tell them matlab you can predict that nuclei is NMR active or NMR inactive. Okay, so for that criteria अगदी डोळे झाकून सांगते मी, आप आंख मूंद करके भी बोल सकते हो कि if they gave you like, or first of all I would like to tell you what I have introduced in this chart. Okay, so whatever this chart is here, this chart explains you, or this table explains you about the NMR active and NMR inactive nuclei. So for that purpose, when you look towards the atomic mass and atomic number and their examples, which you can look towards in this table very easily. So whenever you have the नीट लक्ष देऊ नाही का, whenever you have I value, whenever you have काय I value, and that if that is not equals to 0, if that is not equals to 0, I matlab spin quantum number. And now here please do not get confused with I and I matlab spin quantum number, and spin quantum number ये इलेक्ट्रॉन्स को होता है. ऐसे प्लीज कंफ्यूज मत होइए, आपको तभी ये कंफ्यूज होगा अगर से आप लोगों ने प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्लासेस नहीं किए होंगे तो ही. Okay, but I know very well those who are present in previous classes, and those who have seen already the recordings of the classes, they are very well known. Now I is not equals to 0, I is not equals to 0, I is equals to 0. Now which type of nuclei is NMR active and which type of nuclei is NMR inactive? एक पाठ करा किंवा सोपा आहे, पाठ करायची गरज नाही ऍक्च्युली, आपको मगअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो अच्छे से सुनो. Those nuclei who have or who represents I value is equals to the 0, that one will be NMR inactive. That one will be NMR inactive. Okay, this will be NMR inactive, किंवा तुम्ही त्याला दुसऱ्या शब्दात असं म्हणू शकता, this is not NMR active, this is not NMR active. What I told you just now, I told you about
I value. I told you about I value. I is what? Spin quantum number. So if I is equals to 0, then this is NMR active or inactive. NMR inactive. तुम्ही तुमच्या मनात म्हणू शकता, recall करू शकता. And now those nuclei who have their I values which is not equals to 0, which is not equals to 0, they will be NMR active. They will be surely NMR active. Now you may ask me, ma'am, if I is not equals to 0, what does it mean? It means what type of value it should possess. Will it be half integer value, or will it be an integer value, or will it be whole number? So its answer is in front of you, right in front of you. Now, as I told you just now, that I'll be showing you in the in the present table, that is those nuclei, who have their I value is equals to 0, as just now I told you, and I'm waiting for your replies. I value, if it is equals to 0, then that nuclei is NMR active or inactive? Yes, guys. NMR inactive. NMR inactive, and that I'm showing you right in front of you in the table by using blue color arrow, and what it is? NMR inactive. Now, or you can say in another words here, which I have introduced, that is nothing but not NMR active. Those are not NMR active. Is that clear to everyone? Yes, tell me please. Yes, ma'am. क्योंकि मुझे बाकी के बारे में भी और बोलना है, इसलिए पहले मैं ये पूछ रही हूँ. ओके, now if you have your एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, सबसे पहले अब इस 0 के लिए ही बोल दूंगी. आई वैल्यू मतलब स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू, which is about proton and neutron, which is about protons and the neutrons, not about electrons. Again and again I'm telling you guys. Okay, so whatever these your nucleus is there, whose NMR who is NMR inactive, or in another words who are not NMR active, those are representing you, or those who possesses you the value for I is equals to 0. मतलब कि उनके जो कुछ भी protons, and let me take another color pen so that you can easily look towards. So that protons and that neutrons are here. Okay, guys. Sorry. Let me just take a sip of water. You guys can also have. Yeah, thank you. So where I was on प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो देखिए, जब कभी भी आपके पास में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के जो कुछ भी वैल्यूज होंगे, अगर से दोनों के दोनों वैल्यूज इवन हो, अच्छे से सुनो. अब थोड़ी देर ना सुनो जस्ट, उसके बाद में मैं ना आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड लेके अच्छे से सब कुछ एक एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगी. थोड़ी देर जस्ट सुनिए, और आप जब इसके डिटेल में जाओगे ना, तो आप बोलोगे वाओ, इट वाज एन अमेजिंग क्लास. सब कुछ क्लियर हो जाएगा. जिस आप लोग जब एमएससी सेकेंड ईयर में जाके, या फिर बीएससी में आप रहो, एमएससी में रहो, किसी भी क्लास में आप रहो, तो आपके एनएमआर के बेसिक्स क्लियर होंगे. दोज न्यूक्लियस हु आर इन एनएमआर एक्टिव एंड एनएमआर इनएक्टिव. ओके, सो जस्ट गिव मी 5 to 10 minutes, guys. Okay, so those nuclei whose I value is 0, and it means that atomic mass and atomic number. अब आप लोगों को, सब लोगों को पता है atomic number मतलब, हाँ इतना लिखते हैं, atomic number is equals to Z, and Z is equals to P, मतलब कि total number of protons
and if that is equals to E1, if that is equals to E1 मतलब क्या हो गया इसका, ये बात मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर से प्रोटॉन की वैल्यू E1 है. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक मास मतलब मास नंबर पर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट आई विल बी टेलिंग यू, बट बिफोर दैट consider this is for neutrons. Consider this table. Atomic mass is about number of neutrons. I think this thing is clear to everyone. And for example, अगर से आप लोग मुझे पूछो, मैम which nuclei is possessing you I value is equals to 0, or can you please tell me, ma'am, what is there any nuclei which is present in our periodic table who represents I value is equals to 0? So yes, guys, I'm ready to tell you the example, and that is nothing but I value is equals to, what is equals to? I value is equals to 0, and it's a most famous one example is there, and that one example is C, which again have introduced in my slide. That one is C12. C12 आणि त्याच्या इथे खालती मी 6 लिहिते, दिसतंय का? थांबा, पेनच दुसरे वापरते म्हणजे तुम्हाला मे बी दिसेल. C6 दिसतंय का रे? हे 6 like this I want to write C612. Okay, so this nuclei means any organic molecule is having any organic molecule is containing, generally it contains, I mean to say, carbon and the hydrogens, but it is मतलब जो न्यूक्लियाई आपको उसके उस न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर से इवन हो तो वो न्यूक्लियाई विल बी आई इज इक्वल्स टू 0, एंड दैट न्यूक्लियाई विल बी NMR एक्टिव और इनएक्टिव. यस गाइस, Inactive. आता कसं हे सांगण्यासाठी मी काय करते, एक व्हाईट बोर्ड घेते आणि सांगते तुम्हाला. ओके, माहिती नाही मला ह्याच्यावर व्हाईट बोर्ड घेता येतो का नाही, पण ठीक आहे, स्लाइड आपण परत एकदा घेऊया, काही प्रॉब्लेम नाही. तर फॉर एक्झाम्पल, वन न्यूक्लियाई आय एम टेकिंग C612. C612 means whose Z value is equals to P value is equals to E value, but here we are not dealing with the E value, here we are dealing with the P value, and Z मतलब उसका bottom का उसका atomic number. This much is very well known to everyone. As I told you, read these points before coming to class. Okay, so Z value is equals to किती येणार इथे 6. It will be equals to, for given nuclei of our carbon, then that Z value is equals to 6. It means that how many number of protons are there? Obviously, by using this formula, what can we save, or what can we place there, or what can we mention over there? Z value is equals to P, and what is that P? P is equals to 6. What is that? P is equals to 6. मतलब number of protons अब कितने हो गए हमारे पास? 6. अब मुझे बोलो आप लोग, number of protons are 6 means it is odd or even? चलो बोलो सब लोग, odd or even? Odd ना? Odd की even? 6. Very good. Even. Is there anybody who thinks that it's odd? Everybody knows very well actually. So now come to the next point, which is about neutrons. Let me take another color. Neutron. Now to calculate the number of neutrons, you are using one formula, and for that purpose, which formula you can use? That formula I'm gonna to mention, I'm gonna to use here. Wait a minute. And it is nothing but A is equals to, A is nothing but the mass number. A is nothing but the mass number. Sorry for bad handwriting, but try to understand. I'm writing with my fingers, as you know very well. So A is equals to N
minus p. Okay, but when you want to calculate the n value, that is equals to a minus p, this formula can become like this. I'm telling you from 11th standard how to calculate number of protons and number of neutrons. Nobody can tell you like this. Okay, but I want to take you from ground level to the means extreme high level. That is why I'm telling you everything. So some may get bored. You can just go out of this, or you can just leave this meeting and you can watch the recording if you know this. But I want to tell each and everything, because everybody is not that much smart. That is why I'm telling you. Just 5 to 10 minutes लगेंगे इस सारे मैटर को. Okay, so n value is equals to for example n is equals to, आता मला सांगा इथे a means what? Mass number is written wherever on in your atom. This is what? Atomic number. That I mean to say z, and this is what a मतलब mass number. अब यहाँ पर m में सब कुछ नहीं लिख सकती, तो मैं यहाँ पे m लिखती हूँ. हाँ, mass number. So n is equals to a means what? 12 minus of 6, that is equals to 6. आवाज येत नाही? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm clearly audible ना? Yes, ma'am. Hello, audible आहे ना? कोणाच तरी आता मेसेज ma'am. दिसला मला याच्यावरती. Okay. So n is equals to 6. Now can you guys please tell me, n is equals to 6 मतलब क्या? Number of neutrons are 6, number of protons कुठे गेले? 6. हे बघा, आणि ना number of neutrons आणि protons, what does it mean? It means, I mean to say, z is equals to 6 मतलब कि p is equals to 6 and n is equals to 6. I don't want to tell you, or I'm not going to tell you, or I'm not mentioning that प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनची संख्या सेम असली पाहिजे असं म्हणत नाहीये मी. कुठेच बिलकुल मी तसं मेन्शनच केलं नाही. आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ इट इज इवन मतलब प्रोटॉन का नंबर इवन और न्यूट्रॉन का नंबर भी इवन. अगर से ऐसे हो तो अब आप लोग मुझे बोलो कि ये कार्बन का न्यूक्लियाई विल बी, आई वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0 की -1 की -2 के हाफ इंटीजर की इंटीजर वैल्यू सांगा बरं. व्हाट इट I विल is बी? equal to 0. एंड i Zero. इज इक्वल 0 का मतलब क्या होगा? NMR Inactive. inactive. तो आप अब सब लोग मुझे बोलो, दैट इज वाई कार्बन जो कुछ भी होता है वो हमारे हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कभी भी प्रेजेंट होता है, फिर भी वो किसकी कपलिंग देता है? हाइड्रोजन H1 की कपलिंग देता है. क्यों? क्योंकि C612 is NMR active. Are you guys clear with this? Yes, If ma'am. yes, then I will Yes, explain ma'am. you with C13. Okay, यहीं पर मैं थोड़ा सा इरेज कर करके आप लोगों को वो बात भी बोल देती हूँ. हाँ, C12 अगर से नहीं है तो क्या करते हैं हम? C12 के जगह अगर C13 ले लिया तो अब मुझे बोलो, अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बाबा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर कितना है उसका? ओ सॉरी. सो उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा क्या बेटा? एटॉमिक नंबर विल नॉट चेंज. उसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 ही होंगे. बट अब बात आती है उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की. अब बात आती है जब उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, एट दैट टाइम ए वैल्यू इज डिफरेंट विच इज नथिंग बट द 13, एंड 13 माइनस 6 कितना होगा रे? बोलो सब लोग. 7. 7. And now, can you please tell me, this is 7 means it is even or odd? It is nothing but odd. And when you have it's a proton number, it is even. Now pair has changed. When neutrons are
odd, and when protons are even, at this time your nuclei will be I is not equals to 0. Now why that I is not equals to 0, that I'll be explaining you. But this nuclei will be, एक roughly सांगा मला, if I is not equals to 0, then this nuclei will be either active or inactive. अभी अभी NMR जैसे NMR एक्टिव और active. इनएक्टिव, Active. हाँ कुछ लोगों ने बीच में ही क्लास छोड़ के अब आ गए होंगे, तो मैडम कुछ देर पहले एनएमआर एक्टिव बोल रहे थे, कुछ लोग अब एनएमआर इनएक्टिव एक्टिव बोल रहे हो, और कुछ देर पहले कार्बन का न्यूक्लियर लिया था तो एनएमआर इनएक्टिव बोल रहे थे। ऐसे क्यों किया, ऐसे मत बोलो, या फिर वीडियो में भी जब आप लोग देखोगे तब बिल्कुल भी ऐसे मत बोलो, क्योंकि आप अगर से ऐसे बोल रहे हो उसका मतलब आप वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हो। नाउ दोस्त who are here who are getting confused with ma'am how to decide I is not equals to 0 and I is equals to 0, देखिए जब कभी भी आपके न्यूक्लियाई में, चलो लेट मी टेक दिस स्लाइड, ओके सेव दिस स्लाइड, sharing the slide which is right here, and same is the slide in which what I told you, that is I is equals to 0 जेव्हा I is equals to 0 जेव्हा असतं ते NMR inactive असतं. ह्याचं रिझन सांगते नीट ऐका सगळेजण. I is equals to 0 म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि यहाँ पर कार्बन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, तो उसका नंबर C612 में मैं पूछ रही हूँ। किस में पूछ रही हूँ मैं, पहले तो C612 में मैं पूछ रही हूँ, उसका I is equals to 0 क्यों, वो बात बता रही हूँ। I मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल कपल विद ईच अदर, मतलब कि उनकी पेयरिंग होगी। तो आप लोग मुझे बोलोगे मैम कपलिंग कैसे हो, पेयरिंग कैसे होगी, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कपलिंग होती है, दे cancel out their spin, coupling नहीं बोलना है मुझे, they cancel out their spin, I mean to say they cancel out their spin. How they cancel out their spin, that I'm gonna to write it here, or that I'm gonna to show you here. एक प्रोटॉन ऐसे पेयर होता है, दूसरे थर्ड, पहला प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा प्रोटॉन, let me draw it clearly so that you should not confuse. Here same way, and now number of protons कितने थे, 6, number of protons कितने थे, 6, number of neutrons भी कितने थे, 6, मतलब even थे, तब ऐसी उनकी स्पिन क्वांटम नंबर कैंसल आउट होता है एक दूसरे के स्पिन से, सेम एज दैट ऑफ फॉर एनएमआर, एंड दैट इज व्हाई। अब मुझे यहाँ पर बोलो आई वैल्यू इसकी अगर प्लस हाफ है उसकी माइनस हाफ, लाइक दिस दे cancels out their spins, मतलब इसकी अब I value is equals to will be 0 or it will not be 0. Yes guys, are you clear? समजते का, इतक्या बेसिक मध्ये कोणीच जाणार नाही, हा कळतंय, क्लियर होतंय? हो मैम। चलो अब इसका मैंने बोल दिया, अब मुझे बोलो आप लोग कि n की वैल्यू अगर से 7 हो, n की वैल्यू काय बेटा 7 आहे, म्हणजेच काय हो, एक जो न्यूक्लियाई आहे तो एक न्यूक्लियाई काय होणार, इथे अनपेड राहणार. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, hello, are you getting my point guys? Yes ma'am. So whatever the left one your
न्यूट्रॉन इज लेफ्ट ना, यहाँ न्यूट्रॉनला आता मला सांगा स्पिन किती आहे, इट विल बी ऑब्वियसली प्लस हाफ, it will be obviously plus half. And now you can look towards in this table half integer value. कळतंय का तुम्हाला मी काय सांगतेय? Are you guys clear? Look towards this example very nicely and smoothly. I tried to explain this thing. That is number of protons are 6, मतलब वो number of protons are equal to E1. How's that? E1. And what is mean by that E1? E1 मतलब ये चार्ट देखो, ये बात बोल रही हूं मैं आपको. और ऑड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऑड मतलब क्या बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Here we explain this thing by using number of neutrons and how much neutrons were present in our C13 nuclei. किसमें? C13 में कितने न्यूक्लियाई थे? C613 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे? सॉरी, C13 में number of neutrons are 7, and 7 means its atomic mass value, that is nothing but, in another words you can say, or you can call that, some literature data you will find that is as atomic mass, and some literature data will give you directly it is as number of neutrons. Okay guys, so now if it is equals to n is equals to 7 and n is equals to 6, मतलब ये पेयर हो गई even and odd. Now इसकी I value is equals to 0 है कि नहीं आहे सांगा बरं मला. Is that I value is equals to 0? Tell me please. No, It is it is not not at equal to 0. It is not equals to 0. And how much it is? It is equals to half. What does it means? If it is मतलब मैंने आप लोगों को जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि the nuclei who have or who represents half integer value, या फिर integer value जब कभी भी आपके nuclei represent करते हैं तब वो nuclei will be NMR active or inactive. It is absolutely NMR active, which I can show you like here. देखिए, odd रहने दो, odd even रहने दो, या even odd रहने दो. These are the protons, these are the neutrons. Now you guys can have look on the different number of your protons and neutrons, like मग hydrogen घ्या, deuterium घ्या, tritium घ्या, phosphorus घ्या, like so on you can have them. आणि मी हा व्हिडिओ खूप लेंथी होईल आणि काही जणांना खूप बेसिक वाटेल, म्हणून मी ह्या 2 एक्झाम्पल वरती विचारतीये तुम्हाला. C6 is NMR active, sorry, C6 मैं नहीं पूछ सकती, C612 is NMR active or C613 is NMR active? Yes guys, please tell me. C13. 13 Right. is NMR active. Are you guys clear with this? Are you guys No. clear with this? हाँ, अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ. इवन ऑड वाला एक बताती हूँ और ऑड ऑड वाला एक बताती हूँ, उसके बाद में स्टॉप करती हूँ. ये बेसिक वाला पॉइंट आप लोग बोलोगे मैम आपने बहुत ही 11 से बहुत ही बेसिक से बोला, बट आई थिंक आपके क्लास में एक आध अगर स्टूडेंट हो ना जिसको ये पता नहीं था, तो फिर मेरा क्लास सफल हो गया ऐसा मैं समझूंगी. ओके, आई नो कुछ ज्यादा ही बेसिक बोल रही हूँ, बट क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ. एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो, ऐसा मुझे लगता है कि उसके हाथ से कुछ भी बेसिक छूट जाए. That is why I'm extremely sorry for those who are quite advanced learners. So see now H11 इसका एटॉमिक नंबर मतलब Z वैल्यू दैट इज इक्वल टू P वैल्यू. मैं अब ना ये ZP ऐसा नहीं करती हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली पूछती हूँ. दिस 1 इज इक्वल्स टू P मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 मतलब odd, and this 1 is equals to मतलब उसका मास नंबर इज 1 and that is equals to that is equals to कितनी 1, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करना है तो A माइनस P या फिर Z भी होता है. सो A माइनस P मतलब 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो 0 कैसा है, ऑड है या इवन है? E1. वाह 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 वाह. इट इज ऑड और इवन असं सांगत असताना
असं सांगत असताना केव्हाही एक गोष्ट लक्षात घ्या, H11 हे झिरोला काही म्हणत नाही आपण, मतलब की H11 इट इज इक्वल्स टू A मायनस 0, सॉरी A minus P मतलब 1 minus 0, 1 minus 0, that is equals to when it came to the point 0, at that time odd even नहीं बोलते हम जीरो को, तो उसको मुझे बोलना है आपको I value is equals to number of protons किती हो 1, number of number of protons किती 1, number of neutrons किती 1, म्हणजे यांची जी काही स्पिन आहे ती स्पिन किती असणार आहे, हाफ इतकी असणार आहे. their spin will be half, and whatever this spin is there, whatever this spin is there, this spin half मतलब which is not equals to 0, which is not equals to 0 मतलब it will be NMR active or inactive. It will be obviously NMR active. It will be NMR active. Now come to the next point, that is H2. H2 मतलब ड्यूटेरियम इट इज, यालाच तुम्ही असं लिहू शकता D12. कसं लिहा, वन एंड द सेम. सो 1 माइन, अब यहाँ पर इसकी 1 की वैल्यू क्या होगी 2, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो अब ये एग्जाम्पल जो होगा, अब ये एग्जाम्पल जो होगा, ये एग्जाम्पल विल बी टेलिंग यू अबाउट सिंपली odd number of your neutron, odd number of your neutron and even odd number of your proton. मतलब क्या, it will came out to be in the first criteria. अब स्लाइड में क्या हो गया, 1 की जगह 2 and 2 की जगह 1 हो गया है, जिसको कि आप लोग थोड़ा सा समझ लो. ओके, अब क्या होता है, नंबर ऑफ protons are 1 and कुठं गेला, number of neutron is 1 and here number of proton is, थोडं हॉटस्पॉट झाले, मी याला काय करते, रब करते. So number of protons and number of neutrons. For H12 के लिए अब यहाँ पर आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए थे, number of neutrons are equal to 1 and number of protons are equal to also 1. So H12 के लिए number of neutrons 1 and 1, number of neutrons are 1 and number of protons are 1. What does it mean? It means it have what type of nuclei, odd type of nuclei it is, which is NMR active or NMR inactive. So देखिए अच्छे से H11 whose number of neutrons and number of protons, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वैल्यू, H11 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वैल्यू कितने थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू वाज equals to 0 in H11. वन इसकी स्पिन हाफ, इसकी स्पिन हाफ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, मतलब कि उसकी जो कुछ भी स्पिन होगी इस H12 किया, इस H12 की जो कुछ भी स्पिन होगी दैट स्पिन विल बी इक्वल्स टू हाफ विल बी इक्वल्स टू 1. तुम्ही म्हणाल मॅम तुम्ही स्लाइड मध्ये तर खालचं वर आणि वरचं खाली झालीये, तेवढं एक समजून घ्या बेटा. अँड नाव झिरोला तुम्हाला म्हणायचंच असेल एखाद्या कंडिशन मध्ये तर इव्हन म्हणा, पण इथे आता जेव्हा तुम्ही बोलताय, आता कोणीतरी सांगितलं होतं, सो ऍट दॅट टाइम मी काय म्हटलं मला लक्षात येत नाही, बट दॅट इज इक्वल्स टू, इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन देन इट विल बी केम आउट टू बी इवन अँड दॅट इज मतलब की P इज इक्वल्स टू 1 फॉर H11 and N is equals to 0. सो मला सांगा आता ह्याची आय व्हॅल्यू म्हणजे स्पिन क्वांटम नंबर ह्या 1 साठी एका प्रोटॉन साठी किती असतो, हाफ. मग हाफ म्हणजे मला सांगा आय व्हॅल्यू इज इक्वल्स, इफ इट इज इक्वल्स टू हाफ, इफ इट इज इक्वल्स टू हाफ म्हणजे इट इज नॉट इक्वल्स टू काय 0, म्हणजेच हा NMR ऍक्टिव्ह की इनऍक्टिव्ह हो, सांगा रे बेटा पटापट. NMR ऍक्टिव्ह की active. इनऍक्टिव्ह, ऍक्टिव्ह. आणि H11 who is having
half integer value, that is half H12 साठी half that is equals to 1, म्हणजेच ड्यूटेरियम साठी 1 होते ही व्हॅल्यू, आणि तुमच्या प्रोटॉन साठी नुसत्या म्हणजे हायड्रोजन साठी म्हणायचंय मला, तर ती होते हाफ व्हॅल्यू. दोन्हीच्या दोन्ही हायड्रोजनचे जे न्यूक्लियाई आहेत ते NMR ऍक्टिव्ह आहेत. म्हणूनच कधी कधी हायड्रोजनला आपण रिप्लेस करतो ड्यूटेरियमनी, जिथे की OH च म्हणजे अल्कोहोल किंवा मतलब कि अल्कोहल या फिर अल्डिहाइडिक जहां पर कर्व होता है वहां पर आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हो. अब मुझे आज के क्लास पर से आप लोगों को समझ में आया क्या, ये बात बोलो. व्हेन यू हॅव एक फक्त इथे नीट करून घ्या तुमच्या स्लाइड मध्ये, खालचं वरती आणि वरचं खालती झालंय जेव्हा स्लाइड बनवत असताना, तर ते काय आहे, H11 जे आहे H12 हे खालती झालंय आणि H11 हे वरती झालंय. तेवढं प्लीज करून घ्या. नाउ कॅन यू गाइस प्लीज टेल मी, आर यू क्लियर विथ ऑड इवन आपके NMR एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियस कब और कैसे और क्यों होंगे? आर यू गाइस क्लियर विथ दिस क्राइटेरिया? सो आज के क्लास को मैं नाम दूंगी न्यूक्लियस या फिर NMR एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियाई वाला क्लास. इज दैट ओके गाइस? Clear Yes, everyone? ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I think with this you guys are clear and you guys are pretty confident with the NMR nucleus. If they ask you in your examination एक आध न्यूक्लियाई देते हैं या फिर आपके वाइवॉस में, मतलब अब तो वाइवॉस नहीं होगा बट जब भी आप इंटरव्यूज में वगैरह जाओ तो या फिर आप जब कभी भी, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ESR मॉसबॉट जब कभी भी लूंगी या फिर कोई भी स्पेक्ट्रा हो उसमें एक आध न्यूक्लियाई NMR एक्टिव या फिर इनएक्टिव, ना कि NMR ओनली, दैट माइट बी ESR, एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इट कैन बी. सो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा क्या कि कौन से न्यूक्लियस NMR एक्टिव एंड इनएक्टिव हो गए, ना कि ओनली NMR एक्टिव इनएक्टिव, ESR एक्टिव, मतलब हर एक स्पेक्ट्रा के लिए उसके जो कुछ भी कंडीशंस होंगे, कहीं पर उसकी कंडीशन I शुड बी इक्वल्स टू 0 होता है किसी स्पेक्ट्रा में, तो किसी स्पेक्ट्रा में I शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एक्टिव क्राइटेरिया, like which in NMR which we studied. Okay guys, please tell me, are you clear with all these things?